Hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Vedant Agarwal. Our top story, well, it's election season and in Chhattisgarh, shocking news coming in just before the assembly elections. The Narayanpur BJP district vice president Ratan Dubey was murdered allegedly by Naxalites. In fact, the BJP leader of the Narayanpur district was murdered by a group of Naxalites on the campaign trail, and he was a vice president of this particular area, and this happened in the Kaushal Nagar area of Chhattisgarh. Of course, this is likely to become a huge political issue as well, as Naxalite violence has of course been on the rise in Chhattisgarh. And moving now to the campaign trail, where all the newsmakers on NDTV in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, NDTV is on the ground, and Raman Singh, who is being seen of course as the key contender to Bhupesh Baghel, he expresses confidence that the BJP will form the government in Chhattisgarh, and well, he also says that the Congress is making empty promises. Take a look at this interview. I'm joined by somebody who's really a veteran and old and in Chhattisgarh politics, who's been 3 times Chief Minister. How do you see, sir, this election now that you're trying to make a comeback? ये इलेक्शन छत्तीसगढ़ के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है और आज प्रथम चरण के फेज़ 1 के इलेक्शन 7 तारीख को होना है। 2 दिन बाद मतदान होना है। तो 20 सीटों में करीब करीब इलेक्शन के चुनाव के अभियान पूरे हो गए। कल योगी जी यहाँ आ रहे हैं। 2 दिन पहले हमने अपने संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी किया और आज मैं विश्वास से कह सकता हूँ छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और पहले भी विश्वास था, मगर जो घोषणा पत्र का जो स्वागत लोगों ने किया, जिसमें अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र को जारी किया, उसमें किसानों के हित के लिए बड़ी बड़ी बातें हमने स्वीकार की। उनके लिए 21 क्विंटल धान खरीदी, 3000 रुपये से ऊपर का उनका किसानों को दिए जाने वाला रेट 3100 रुपया, बोनस को एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था और 2 साल का बोनस जो बाकी था वो 2 साल का बोनस देने की घोषणा भी हमने कहा। महिलाओं को 12,000 रुपया, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके परिवार के लोगों को 12,000 रुपया सालाना उनको दिया जाएगा। गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा और किसान के धान एक दाना धान खरीदी की व्यवस्था हम करेंगे। तो ये एक बड़ी घोषणा छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए किए हैं। मजदूरों को भी 10,000 रुपया वार्षिक दिया जाएगा। सर, पर कांग्रेस भी कह रहा है कि वो अभी 3,600 बनाएगा और बोल रहा है कि ये तो कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म है जो हमने पहले शुरुआत किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ही धान खरीदी की व्यवस्था शुरू की। मैं मुख्यमंत्री था तो हमने खरीदी की व्यवस्था शुरू की और 5 लाख से बढ़ के 70 लाख मीट्रिक टन तक खरीदी की व्यवस्था हमने की। इन्होंने सिर्फ बोनस बढ़ा दिया और उसकी वजह से सरकार 3-5 साल के लिए चली गई। आज हम फिर से उसी स्थिति में हैं और छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा मोदी जी पे करती है और डॉक्टर रमन या बीजेपी पे करती है। So, well, you heard the BJP in Chhattisgarh, but what is the Congress saying? Well, Chief Minister Bhupesh Baghel says that the BJP is scared and it's deploying the ED, CBI and other central agencies against the Congress for political vendetta. He also comments on the Mahadev betting app case, which of course is becoming a huge political controversy in the state. Take a look. I'm joined in an exclusive interview with the Chief Minister of Chhattisgarh, who's facing now an allegation. Very surprisingly, the Enforcement Directorate saying that, you're involved and saying that it's a matter of investigation. How do you respond to this, sir? ये तो सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं पा रही है, तो ईडी, आईटी जितने भी डीआरआई सबको सामने करके कर रहे हैं। और इस मामले में तो ये तो पूरा ये उसका क्रोनोलॉजी ये षड्यंत्र है। तो अब इस प्रकार से बात करने से कोई और छोर है नहीं, इसका कोई अर्थ भी नहीं है। एक आदमी पकड़ के आप करवा रहे हैं
और मेल से आ रहा है, उसका कोई एथेंटिसिटी है? उसको पकड़ क्यों नहीं रहे? हम तो लुकआउट सर्कुलर जारी किए हैं, तो पकड़ने की जिम्मेदारी भारत सरकार के, उन दोनों लोगों को पकड़ के क्यों नहीं लाते? या जिसने एफिडेविट मेल किया है उसको पकड़ क्यों नहीं रहे हो? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? तो इसका मतलब वो मिला हुआ है आपसे, ईडी वालों से और भारतीय जनता पार्टी वालों से मिला हुआ है, तभी ये सब कर रहे हैं। आज भाजपा ने यूसुफ स्मृति ईरानी सब आपका ऊपर आरोप लगा रहा है, आपका क्या कहना है उसका ऊपर सर? वो तो ऐसा है कि आरोप लगा के बदनाम करना, इसके अलावा और क्या है? मैं तो पहले ही बोला कि ट्रंक में पूरा पैसा आया है और अपना पैसा खपाने के लिए हम पे आरोप लगा रहे हैं, कर ये रहे हैं, और बदनाम हम लोग कर रहे हैं। You were the first one to in fact write and complain in August 2023 about the fact that there should be an investigation into Mahadev app. What is your response to now that this entire issue has been brought up? देखिए, महादेव पे हमने कार्रवाई शुरू की और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया, और भारत सरकार हमने अन्य राज्यों को भी लिखा कि जितने भी इस प्रकार से चल रहा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार रोक नहीं लगाई। जिम्मेदारी ये है, नाकामी भी भारत सरकार की है कि महादेव के संचालकों की गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है। आपके साथ क्या डीलिंग हुई ये पहले बताएं, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? आरोपी को बचाओ, है ना, और दूसरे को बदनाम करो, ये चल रहा है इनका। One last question on the future of Chhattisgarh. This is going to be an important election for you. Are you the chief minister? Congress hasn't announced you as the chief ministerial candidate, but you are leading the front. So are you clear that you are going to be one of the biggest contenders in this election? देखिए, मेरे ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, आगे हाईकमान जो फैसला करें। And the issue of people, why do you think that this time people will vote for you? What is the difference that you have made? देखिए, 5 साल जो हमने काम किया है और आगे जो 5 साल काम करेंगे, तो कांग्रेस पर भरोसा है, हमारी सरकार पे भरोसा है, और इसलिए हमको वोट करेंगे। Thank you very much, Mr. Bhupesh Bagal, speaking to NDTV. This was Mr. Bhupesh Bagal making it very, very clear in an exclusive interview to NDTV that saying that he was the first one to really investigate into the matter, and this is completely unacceptable the way the Enforcement Directorate has gone ahead and tried to attack him and sully his image ahead of the elections. So the high-stakes campaign there in Chhattisgarh. But moving now to Mizoram, that goes to polls for its 40-member assembly on November the 7th. And it would be yet another tough poll battle for Mizoram Chief Minister Zoramthanga and his party, the Mizo National Front. Well, the two-time Chief Minister this time is up against a multi-cornered fight with old-time opponent, Congress, ally, the BJP and a young party, ZPM, throwing a political challenge. Ratndeep Chaudhary went on a campaign trail. 79-year-old Mizoram Chief Minister holding a street corner meeting for his party, the Mizo National Front or MNF, at Sifir village on the outskirts of capital Aizawl. This area is part of his Aizawl East 1 constituency. He brings up the unrest in neighbouring Manipur. The three-time Chief Minister has not only sheltered thousands of internally displaced tribals from Manipur, but had taken a stand against the Manipur government led by BJP. Though an NDA ally, Zoramthanga also took a stand against the centre by sheltering nearly 40,000 refugees from neighbouring Myanmar. We are not a partner with the BJP in election. We are only a member of ND in the national center. In an issue like the Myanmar refugees, government of India said that you should push them back, and the Bangladesh refugees, you should push them back. But we told them that we are just following what the central government has done many decades ago. Our stand in Manipur is a big plus point in the coming election. MNF swept the 2018 assembly polls, winning 27 of the 40 seats. Zoramthanga's party has projected him as the guardian of the Chin-Kuki-Zo tribes of Northeast, even as the other parties, including BJP, have called him out on corruption, unemployment, drug menace and poor infrastructure. If anything bad happens and if BJP is to be blamed, Zoramthanga will take part of the blame. Mizoram has been under the MNF rule for such a long time. We had enough of them.
Long before he joined politics, Zoramthanga was a fighter in a Mizo insurgent group. After the 1987 Mizo Peace Accord, he joined politics and became a chief minister for the first time in 1998. Zoramthanga has been veteran of many elections, and fighting elections is nothing new for him, but this time around in a multi-cornered fight, perhaps this is a tough battle for himself as well as his party, the Mizo National Front. But the veteran politician is confident that once again his party would be able to come back to power. From Sifir in Mizoram with camera person GD Shankar, Ratnadeep Chaudhary for NDTV. So what a fascinating fight there in Mizoram. We'll take a short break now. There's more news on the other side. Welcome back. Our big focus on NDTV, the devastation caused by the earthquake in Nepal and the aftermath. A 6.2 magnitude earthquake, in fact, hit Nepal on Friday night, late night on Friday, in fact, and the aftermath is that of loss, shock and grief in Nepal. In fact, over 150 people have been killed in Nepal, and there's destruction on the ground as well. And many shockwaves also sent across North India because tremors were felt. And the big question now is, are we prepared for a possible earthquake? Do we need a rethink as far as our disaster management strategy is concerned? My colleague Tanish Punjabi is on the ground in Nepal, and he sent us this report from a government hospital where many of the victims have now been shifted. I'm right now in Beri Hospital in the Nepalganj area of Nepal. This is a hospital where the victims are being rescued, were being airlifted from the Jajjarpur. That was the epicenter of the earthquake, around 6.4 magnitude that struck Nepal last night, and claiming more than 140 lives in the earthquake. Now the victims are being treated here. They were airlifted by choppers. They were airlifted by the choppers and brought here. Many of the victims have been taken to Kathmandu also, and this is the Nepalganj area, and as you can see there are a lot of victims here. Around more than 30 victims were being treated here. They've been brought here, they're being treated here. This is the Nepalganj area of Nepal. This is very close to the India border, and a lot of people are being treated here. Some with very serious injuries, some with minor injuries. A lot of injured have been taken. To Kathmandu also. We'll just try to speak to some of the family members of the victims. सर आपका नाम क्या हुआ? ललित कुमार परियार। आप कहाँ पर थे जब ये हुआ, और ये आपके बेटे हैं, इनको कितनी चोट लगी, क्या हुआ? मैं यहाँ नेपालगंज में था, कल आया था इंडिया से, तब मेरे को रात को 11 बजे फोन आया, 11 बजे ऐसा हो गया, पुश कर का चोट लगा हुआ है, हॉस्पिटल लिया हुआ, रुकम खलंगा, तुम उधर से रुकम खलंगा चल जाना। तब मैं जाने के लिए छिंचू तक गया था, उधर से फिर फोन आया, उसको साथ में नेपालगंज भेरी हॉस्पिटल में ले गए, तो वहाँ से लौट के फिर मैं वहाँ से इधर आया। चोट है ये बाबू को? चोट क्या बोलते हैं, इधर को दरार है बोल रहे। अच्छा, चोट आई है। क्या उम्र है? 12। आपके घर में और भी किसी को भी चोट लगी? चोट तो इसकी मम्मी को भी लगी, थोड़ा दर्द हो रहा है बोल रहे, वहीं पर है। ठीक है, डॉक्टर ने क्या बोला इसको डिस्चार्ज करने को बोल रहा है, आज नहीं तो कल होगा। तो फिर 20 दिन 25 दिन के बाद आके फिर एक्सरे करना बोल रहे हैं। So that was the father of one of the victims. Let me tell you, just the epicenter of the earthquake was the Jajjarpur area, which is around 3 to 4 hours by road from here. And all the patients were airlifted and they were brought here in Beri Hospital, that's in the Nepalganj area, and all the patients are being treated. I can just show you in the visuals over there. The patients are being treated, and around more than 30 patients were brought here. The total death toll of the earthquake is more than 140, and more than 50 to 60 people have been injured. A lot of patients have been taken to Kathmandu also, which is the capital of Nepal.
With camera person Rajesh Gupta, Tanishq Punjabi for NDTV. लगातार एयर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे कल रात के भूकंप के बाद और काफी जो है विक्टिम्स को यहाँ पर बेरी हॉस्पिटल जो नेपालगंज में है वहां पे लाया गया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस हॉस्पिटल के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संकेत। सर, कितने लगभग पेशेंट्स आ चुके हैं यहाँ पर और कितनों का इलाज हो चुका है? मैं थोड़ा हिस्ट्री टाइप से कहूँगा। कल रात को जब 11:47 में नेपाली टाइम के हिसाब से जब भूकंप की कंपन शुरू हुई चादरकोट, जो यहाँ से लगभग बाई ट्रांसपोर्ट 4 से 5 घंटे लगते हैं दूरी। लगभग अगर वहाँ के सिनारियो देखा जाए और डाटा लिया जाए तो मोर देन 150-180 डेथ हो चुकी है। तो एक प्रकार का भयावह स्थिति था। तो कल रात को लगभग 2:30 में हम लोगों का टीम बैठा, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में डिजास्टर टीम एक अलग से ही है और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और जो मेयर हैं, जो हमारे अस्पताल के डायरेक्टर हैं और हम स्वयं जो इमरजेंसी प्रमुख भी हैं और प्लस सूचना अधिकारी हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से मैं गैस्ट्रोफिजिशियन हूँ। तो हम लोगों की एक रेस्क्यू टीम बैठी और हम लोगों ने एक निर्णय किया कि पेशेंट को सबसे इजी और डेवलप हॉस्पिटल यही है। लकीली अभी तक किसी की जान नहीं गई है। यहाँ पे आने के बाद एक खाली पर्सन थे जिनको जो ऑलरेडी ब्रॉड डेथ आया हुआ था, हम लोगों के यहाँ जान नहीं गया है। ठीक है। और सर, अगर मैं बात करूं विक्टिम्स के एज ग्रुप की, मैंने देखा काफी बच्चे भी हैं उसमें। किस तरीके के विक्टिम्स हैं उनके? अब इसमें हम लोगों के पास क्या है कि अगर फीमेल और मेल के लिए अगर देखा जाए तो 16 के रेंज में है और जिनमें 4-5 बच्चे हैं और एक प्रेग्नेंट लेडी भी है, जो ऑलरेडी जब हम लोगों के यहाँ आया हम लोगों ने रेडियोलॉजिस्ट को बुला के उसका अल्ट्रासाउंड जब किया तो ऑलरेडी IVF था, लेकिन माँ अच्छी है तो उसको हम लोगों ने PNC वार्ड में ट्रांसफर कर दिया है। अभी वो अभी भी यही है और अच्छी है। उनका माँ का जो स्टेबल कंडीशन है, लेकिन बच्चा ऑलरेडी एक्सपायर है अंदर ही। और उसी अर्थक्वेक बिकॉज मे बी शी गॉट द ट्रामा सो दैट द बच्चा इज द IVF एंड द अदर इज द मेनी मोर केसेज इज द ज्यादा लोगों का ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का ही है, जिनके पैर में चोट लगा हुआ है, जिनके सीने में चोट लगा हुआ है, जिनके हाथ में चोट लगा हुआ है और कुछ लोग हैं जिनके सर में भी चोट लगा हुआ है। So the massive human cost of natural disaster. But moving now to our special report, an art exhibition in the national capital inaugurated by President Draupadi Murmu and how it brings alive the bond between tribals and the wildlife. Take a look. An exhibition at the India Habitat Centre in New Delhi is catching everybody's attention. Organized by the Sankala Foundation, this exhibition is remarkable because all these paintings have been done by tribals from 54 tiger reserves across the country. हम लोग जो है बाघ को एक देवता के रूप में मानते हैं, उसकी प्रोटेक्ट भी करते हैं और इस तरह से देवता के रूप में, जैसे हमारी बहन या बेटियों की जब शादी होती है, स्पेशल कुसराम ट्राइब जो होते हैं सरनेम, जैसे मैं धुरवे हूँ और कुसराम, तो कुसराम में जब बहन बेटियों की जब शादी होती है तो उसे गिफ्ट के रूप में जो मायके जाती है विदाई देते हैं, तो उसको हम बाघ देवता को उसको साथ में दे देते हैं। हमारी जनजाति में प्रकृति से काफ़ी लगाव है। This exhibition was inaugurated by President Draupadi Murmu on Friday. She also met these artists at the Rashtrapati Bhavan before inaugurating the exhibition. A 12-year-old painter, the youngest among these artists, could not hide his excitement. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು, ನನ್ನ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ನ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ. This exhibition has been organized in collaboration with the National Tiger Conservation Authority to celebrate 50 years of Project Tiger. The exhibition ends on November the 5th, but the organizers say there will be many such exhibitions in the future. बाघ भी आप जानते हैं कि बहुत dwindle कर गए थे उनके नंबर्स पहले, और जब उस पर रोक लगाई गई और हंटिंग पे रोक लगाई गई तो वो लोग अपना ऑल्टरनेटिव कहाँ से ढूंढें, क्योंकि वो जंगलों पे आधारित था उनका जीवन पूरा। तो उस कारण से ये ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड का थॉट आया कि rather than hunting the tiger, why don't they paint them? See, the point is this has been organized by the National Tiger Conservation Agency, which is working consistently in and around the conservation of the tiger. This is also celebrating the life around the 54 tiger reserves of the country. With Prashant, Bureau Report, NDTV.
So art there, but with an important social message. That's all the time that we have on this bulletin from all of us here. Goodbye.